evening, you're watching Breaking Views. I'm Rishika Barua. In 2013, the Supreme Court of India denounced the CBI and called it a caged parrot. This after opposition accused the Congress government back in the day of using central agencies to cover up its own wrongdoing and keep political opponents at bay and in check. Cut to 2022, nothing much has changed except the parties in power then are now in opposition and are accusing the government of vendetta politics over the Enforcement Directorate action against opposition leaders, and there is a long list. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi have today been summoned by the Enforcement Directorate in a money laundering case related to the National Herald newspaper. This is coming 48 hours after Aam Aadmi Party Satyendra Jain was arrested by the Enforcement Directorate in a disproportionate assets case relating back to 2015. The list of opposition netas, like I said, in the ED's dock is endless. Karti Chidambaram, accused of facilitating a visa for bribe for Chinese workers when his father P. Chidambaram was the Home Minister. P. Chidambaram is under investigation in the INX Media and SL Maxis case. DK Shivakumar, known as the troubleshooter for the Congress, has been accused in a money laundering case, charged with tax evasion and hawala dealings. Sanjay Raut of the Shiv Sena has been accused in a money laundering case involving his wife. Anil Parab, minister in the Maharashtra cabinet, accused of constructing a resort in violation of coastal regulatory zone rules. Farooq Abdullah, accused in a money laundering case for irregularities in the Jammu and Kashmir Cricket Association. Ajit Pawar under the scanner in a money laundering case involving family members. Abhishek Banerjee and his wife, both accused in an alleged coal smuggling case. Like I said, this list is long. The BJP chief has today said criminals will never say that they are criminals. The question we're asking, is this Enforcement Directorate overdrive in the past few months genuine investigation or pure politics? Well, joining us on the broadcast is a whole host of voices cutting across the political spectrum. But I want to first go across to Abhishek Manu Singhvi. Abhishek Manu Singhvi, the latest developments is that the Enforcement Directorate has now summoned Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for questioning. Has the image of the Congress party, taken a beating at a time when the party is already clearly embattled? Do you think that in this government's 8-year record of continuous vendetta politics, where the news is that today is a day when there is no ED, no IT notice. The news is not that there is a ED notice. The news is not that there is an IT notice. The news is today is a day when there is no ED notice because no Rajneetik Pratidwandi, no political opponent is to be harassed. In this kind of ambience, do you think anybody is worried or concerned about these tactics of this government? Both the persons concerned will go. They will give their statements openly and forcefully. The party or them or anybody who is being questioned in this regard will not be cowed down, will not be pressurized, will not be fearful, will not back off. We will carry our message of Congress values and political unity in this country forward. But one thing is clear, you are able to make yourself in this self-goal and hit wicket look foolish. Even a first-year law student knows that without money movement, without a money trail, without a property trail, without a single movement of 1 millimeter, how there is money laundering, it completely eludes me and astonishes me. Okay. Abhishek Manu Singhvi, you're alleging political vendetta as you have in the past. Now, this was a case that was actually closed back in 2015 by the ED. On what basis has it been reopened now? What more can you tell our viewers? What is the basis on which the BJP opens or reopens from Kashmir to Kanyakumari, from Mewani to Mamta Banerjee, Gujarat to West Bengal? What is the basis? You tell me. The basis is obviously political vendetta. The basis is diverting your mind, digressing your attention from utter instability because of divisiveness and distrust in the country, from people shouting from the rooftops at being attacked in their solar plexus by inflation. Divert and digress from GDP growths which are plummeting every 2 weeks. You give a new figure of GDP growth. Well, if these are your objects, I think it's almost laughable that people will fall for it.
You're saying Mewani to Mamta by your own admission. The question therefore is, with all opposition parties alleging political vendetta against the government, will we see the Aam Aadmi Party, TMC, Sena, NC leaders, I just read out a whole list of leaders under the ED dock, now come together to fight this battle? See, as far as the case I am concerned with is concerned, it is very clear that creating a not-for-profit statutory company where not a penny can be gone out and not transferring a single property movable or immovable of AJL cannot by any stretch of imagination, it can amount to murder, but can't amount to money laundering. And secondly, I am not here to comment about other cases whose full facts one doesn't know. How can you start comparing that if there is one ED proceeding here, all ED proceeding will be dealt with there? But one thing is clear, my charge of political vendetta, my charge of this complete waywardness and cheap political tactics against political opponents is not based on just this one case or one case of another political party. It is based on the pattern you've seen for the last 8 years. You and I read the newspapers every day. It is not as if you are coming out of some new washing machine of the BJP and there is not the slightest taint on you, but nobody gets even questioned. And if you sneeze in a non-BJP political opponent's party, you are attacked by these agencies which are nothing but puppets. This is based on 8 years of experience, not on case 1 or case 2. Okay. You know, the BJP says if you have nothing to fear, then let the government agencies do the job. Why have the Gandhis applied for bail? All of that. How would you respond to that? The government agencies, who has stopped them from doing the job for 7 long years? In 7 long years, khoda pahar nikla chuha. First of all, it was dead chuha because in 2015 you closed this very case. In 2014, the very identical allegations are in a magistrate's court. You are summoning the top leadership of a party in 2022. If this is not sensationalism, if this is not diversion, then what is it? All right, Abhishek Manu Singh, we appreciate you for joining us. Let's also go across to panel. Priyanka Chaturvedi, Rajya Sabha Member of Parliament and spokesperson of the Shiv Sena. Dr. Shantanu Sen, Rajya Sabha Member of Parliament and spokesperson of the Trinamool Congress. And Mahesh Verma, leader of the BJP, are also with us. Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party is also joining us. Thank you all very much for being with us. I want to begin by asking you, Mahesh Verma, you just heard what Abhishek Manu Singh said. He said, as far as the case against the Gandhis is concerned, it is khoda pahad nikli chuhiya. For the past 7 years, you've been trying to dig dirt and you haven't found anything. So now this is all political vendetta. ये बात इनको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं करनी चाहिए? जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, जब ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी गए और कहे कि भाई ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था। तब कहाँ थे हमारे विधि वेता अभिषेक मनु सिंघवी जी? और कल यही कांग्रेस जो है चीख चीख के कह रही थी कि सत्येंद्र जैन के मामले में जो ईडी ने कार्रवाई करी है दुरुस्त है। आज भ्रष्टाचार के मामले में इनका नजरिया एकदम से बदल गया। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पी चिदम्बरम साहब कुछ इसी तरह से, जो आज कांग्रेस कह रही है, इसी तरह से पी चिदम्बरम साहब के मामले में कहती रही। 106 दिन वो जेल में बंद रहे और तमाम कोर्टों को उन्होंने अप्रोच किया, तमाम तरह की वो दलील देते रहे। इस देश को में जो है वो भी भ्रष्टाचार के मामले में, और मैं तो समझता हूं कि भ्रष्टाचार का अभी तक नजीर इन लोगों ने देश में इसी तरह से बनने दिया। घोटाले किए, दोनों हाथ से देश को लूटा, उसके बाद भ्रष्टाचार करने के बाद जो है ये साफ सुथरे तरीके से बचते रहे। आप देखिए ना भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह से, आज ये 10 साल पुराना केस है और आज अगर इंक्वायरी के लिए ईडी ने इनको कॉल कर लिया तो आसमान टूट पड़ा। इन्होंने पूरे देश को नाप दिया, मेवानी से ममता तक बता दिया और इधर से उधर कर दिया। ये सारी चीजें ये लेके बैठ जाएंगी। ये कैसे, मतलब ये देश के प्रति अगर ऐसी सोच है, कानून कोर्ट आपके नजर में कुछ है ही नहीं। आप कहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा था, इनकार किया था। Do you want to respond to that? Opposition parties that are today questioning the government or crying political vendetta, essentially undermining central agencies, undermining the law of the land. That's what the BJP is saying. Priyanka Chaturvedi, could you unmute yourself? If I remember the narrative that the Bharatiya Janata Party had unleashed before 2014 in their election campaign,
was that one statement coming from the Supreme Court which said CBI is behaving like a caged parrot. Today, the same CBI is not just a caged parrot, but a comatose parrot. At least in the cage, they were alive, but now they're almost close to being dead. And people of the country do not have any faith in any of the central agencies, whether you look at a CBI, ED, IT, and everyone. If you look at the track record from 2014 onwards, ED, CBI, ED, IT, NCB, in fact, even the Narcotics Bureau, have focused only on non-BJP leaders, non-BJP parties, non-BJP governments. And it is as clear as daylight that the government is using these central agencies as a political tool in their arsenal to continue to, create trouble as far as non-BJP leaders are concerned. It is a shame. It is a crying shame for this country, which runs on a constitution, which is democratic in its principle, is now seeing such a rampant misuse of all these agencies. And that is what the question should be about. That how come in 2014, when this case was brought about, till 2022, we don't even have a shred of evidence in public domain or public knowledge. And yet they continue to use these threats. We've seen this in Maharashtra, we're seeing it in Delhi, we're seeing it in, with the Congress party, we're seeing it in West Bengal, we're seeing it in Andhra Pradesh, we're seeing it in Tamil Nadu, we're seeing it in Telangana. Which state has been spared, non-BJP state being spared by them? And that is the most question, really. Dr. Shantanu Sen, do you agree with Priyanka Chaturvedi that this is selective targeting of opposition leaders? Only non-BJP states are in the dock, mantris are in the dock, or relatives of politicians are in the dock? I strongly endorse the statement given by my colleague Priyanka Chaturvedi ji. It is crystal clear that the most trustworthy and reliable allies of BJP are ED and CBI. Let me cite you some example. 2019, before Parliament election, who is heckled? Sharad Pawar ji and Ajit Pawar. 2021, April, before Assembly election, who is heckled? Daughter of Stalin of Tamil Nadu. 2021, February, who is heckled? Abhishek Banerjee, All India General Secretary of Trinamool Congress and MP. 2021 March, who is heckled? Partho Chatterjee, our Secretary General. So and you're Minister, essentially questioning the timing. You're questioning the timing of the action. Let me complete, madam. But the surprising fact is, in the same case, when Hemant Biswa Sharma is accused, he is not targeted by CBI and ED. In our state, our leader of opposition, Shubhendu Adhikari, he is CBI charge-sheeted, but he is found to be accompanying Home Minister when Home Minister is in the town or in the city or in our state. No one can touch him even, because nowadays the most popular washing machine in our country and the name of the company is Bharatiya Jumla Party washing machine. महेश वर्मा, जवाब दीजिए. टाइमिंग पे सवाल उठाया जा रहा है कि ये बड़े सिलेक्टिव टाइमिंग पे सिलेक्टिव लोगों के खिलाफ एक्शन होता है. इट्स ऑल वेरी सिलेक्टिव. और सीबीआई और ईडी आपके एलाइज हैं, ये एक्यूजेशन है. मुझे तो सरप्राइज इस बात का कि ये पॉलिटिकल लाइफ इनकी है और ये एक तरह से पब्लिक लाइफ जीने वाले लोग, पॉलिटिक्स करने वाले लोग की ये साहस डॉक्टर सेन ने तो ना स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टाइम के साथ आपसे पूछे हैं भ्रष्टाचार कि ये इसी समय पे इन्हीं लोगों के खिलाफ क्यों होता है एक्शन. नहीं, भ्रष्टाचार मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी राज्यसभा में हैं दोनों, और करप्शन के मामले में इस तरह से इतना अच्छा डिफेंड ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो है, हमने क्या कोर्ट को कहीं इन्फ्लुएंस किया? शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर आप उनको जो है उनको कहीं प्रोटेक्ट करने चले हैं? ये क्या मतलब बनता है? ये देश में कानून है और कानून से इस देश में, और ईडी एजेंसी जो होती है, सीबीआई एजेंसी जो होती है, वही सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं. जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं वही आपसे पूछ रहे हैं. बोथ प्रियंका चतुर्वेदी एंड डॉक्टर सेन वांट टू कम इन. प्रियंका फर्स्ट यू. नहीं, इसका सबसे पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो भी आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं. मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ. पूछने की जरूरत ही नहीं है वर्मा जी. नहीं, प्रियंका जी, मैं पूछता हूँ आपसे कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
आप मुझे बता दीजिए, आप कानून मुझे बनाने आपको वाले एक लोग सेकंड, इस देश में मुझे- ईडी और सीबीआई जो है किसी भी एफआईआर में वर्मा कोर्ट के जी प्रति ऐसा जवाबदेह है, सरकार के प्रति मुझे जवाबदेह है? आपको एक सेकंड, सरकार के आप प्रति सुनने की जवाबदेह क्षमता है या रखें, कोर्ट के प्रति सुनने की जवाबदेह है? क्षमता ये बता रखें। दीजिए। एक यही सेकंड सवाल, भाई साहब, मेरे सवाल just का जवाब because महेश वर्मा जी, उन्हें अपनी बात तो रखने you'll have to दीजिए। ask him to keep quiet. उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए वर्मा जी। All बात the रखने- loudmouths of the Bharatiya Janata Party, I do not need to prove my credentials to y'all. Firstly, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं वर्मा साहब। दूसरी बात वर्मा जी, मैं आपसे बस ये कह दूं कि रही बात सीबीआई की, आपने कहा मैं करप्शन को डिफेंड कर रही हूँ, सीबीआई से जाकर पूछिए तो सही वो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत की कहाँ है, पूछिए अपने चैनल के माध्यम से, पैनलिस्ट बनकर आए, पूछिए क्या हुआ उसको। अभी हाल ही में नारकोटिक्स ब्यूरो का क्या एम्बैरेसमेंट, क्या फजीहत निकली है, जरा उसका जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र से ये सारे खुलासे होते जा रहे हैं और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र ही प्रूव करेगा। ये मैं आपको यहाँ पे खुली चुनौती देती हूँ, क्योंकि ये करप्शन मुद्दा नहीं है आपके लिए। मुद्दा ये है कि कैसे आप प्रजातंत्र का गला घोट दें उन लोगों के खिलाफ जो आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सच को देश के सामने लाते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे, मैं आपको क्रेडेंशियल्स अपने बारे में नहीं दूंगी, जरा क्रेडेंशियल्स अपनी पार्टी से पूछिए कि किस आधार पे सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। किस आधार पे मिसयूज हो रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। महेश वर्मा, आप जवाब दीजिए प्रियंका चतुर्वेदी का, उसके बाद विल गो टू डॉक्टर सेन। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं हमारे दोनों इन विद्वान मित्रों से कि मुझे ये बता दीजिए कि ईडी और सीबीआई अगर कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है तो वो उसकी जवाबदेही कोर्ट के प्रति होती है, सरकार के प्रति होती है? पहला तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि नहीं, बट महेश वर्मा जी, पॉलिटिकल तो हो गया है ना, जब जेपी नड्डा बोलते हैं कि क्रिमिनल्स विल ऑलवेज बी क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल्स विल नेवर एक्सेप्ट देयर क्रिमिनल्स, तो ये पॉलिटिकल तो है। मैं तो वही कह रहा हूं कि इस देश में 8 लाख रुपए की गोभी जो एक गमले में उगा के और उसको जस्टिफाई करना चिदम्बरम साहब का इस देश ने देखा है, और उसको आज डिफेंड करने के लिए हमारे ये दोनों मित्र हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला जीता जागता सबूत है। अशोक चौहान जी, आज तक केस रजिस्टर्ड हुआ, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो करप्शन करते हैं और करप्शन से बचने का रास्ता निकालते हैं, देश को दोनों हाथ से लूटते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम तो बिल्कुल हमारे ऊपर हाथ कैसे डाल दिया। ये क्या तरीका है? डॉक्टर सेन। Mahesh ji, I think you are comfortable with Hindi, so I am answering your question in Hindi. I will take just 2 minutes time. Number one. Sir, I can understand what are you saying. Okay, there are only 26 alphabets from A to Z, right? If I start from A stands for Adani cold scam, B for Balco scam, C for Chiki scam, D for Dal scam, E for earthquake scam. Okay, make your point. Make your point. One second. And what's about, sir, P for painting, C for cheat fund? One second. And like this, if we end by Z, it is Zubin Irani land scam. BJP is the great grandfather of corruption, number one. Number two, nowadays BJP is not satisfied by implementing हिम्मत है तो आप जाइए ना कोर्ट में, मैं तो आपको चुनौती देता हूँ। आप में हिम्मत है तो आप ये बात कोर्ट के अंदर जाके लगाइए हमारे खिलाफ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत हो तो यही जो बात आप कह रहे हैं कोर्ट के अंदर जाइए और कहिए, शिकायत करिए। Why are you so impatient? You are not happy by implementing CBI only. When the investigation is going on, in the name of fact-finding committee, you are sending BJP leaders from other states to influence the investigation. माध्यम मत You बनाइए are not only implementing CBI, you are influencing even the CBI investigation by sending BJP leaders from other states in the name of fact-finding committee. It's absolutely shameful. This is going to continue to be a very heated political debate because the accusation as far as the opposition is concerned isn't a new one. I began by saying what the Supreme Court said in 2013. Parties have switched sides, but the allegation continues to remain the same, and that really is the unfortunate reality. The misuse or abuse, the allegation of misuse or abuse of our central agencies really undermines the really important role that they have to play in our country today. Thank you all very much for joining us. Like I said, this case against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi is coming in just 48 hours after the Enforcement Directorate arrested Delhi's Health Minister Satyendra Jain. Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party is also joining us. Sanjay ji, BJP is questioning, Smriti Irani today in a press conference has questioned who is Arvind Kejriwal to give a clean chit to Satyendra Jain. They've accused Arvind Kejriwal of giving himself
the title of a judge and acquitting his own minister in the people's court. आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? तो बीजेपी कौन होती है फिर सत्येंद्र जैन को एक्यूज करने वाली? भाई अगर अरविंद केजरीवाल क्लीन चिट देने वाले कोई नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको आरोपित करने वाली कौन होती है? क्या ईडी की डायरेक्टर हैं क्या स्मृति ईरानी जी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ईडी का दफ्तर चलता है क्या? आज न्यायालय में मामला है, आप वहां पे अपने साक्ष्य रखने दीजिए ईडी को, वहां पे हमारे वकील उनकी बातों का जवाब देंगे। 8 साल में 7 बार सत्येंद्र जैन ईडी के सामने पेश होते हैं। ईडी ने कभी उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं महसूस की। जैसे ही वो हिमाचल के इंचार्ज बनाए जाते हैं वैसे ही चुनाव के पहले उनकी अरेस्ट हो रही है, सिर्फ एक चुनाव की हार की बौखलाहट के कारण। और दूसरी बात, आज किस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए कैबिनेट में और उनके मंत्रियों को किस बात की चिंता होनी चाहिए? कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं कश्मीर में। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम यहां से पलायन कर जाएंगे, यहां हम रह नहीं सकते, हमारी सुरक्षा को खतरा है। मोदी जी को और उनके केंद्रीय मंत्रियों को चिंता होनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को बचाएंगे कैसे, कश्मीर को बचाएंगे कैसे, आतंकवादी घटनाओं को रोकेंगे कैसे। वो चिंता कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को बदनाम कैसे करेंगे। तो क्लीन चिट अगर देने वाले केजरीवाल कुछ नहीं है तो आरोपित करने का कम से कम साहस उस पार्टी को तो नहीं होना चाहिए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे में रिश्वत लेते हुए लोगों ने देखा, जिन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, जो राफेल में दलाली खाते हैं, वो लोग हमें बताएंगे। आप ये कह रहे हैं जो राम मंदिर के चंदे में चंदा चोरी करते हैं वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे और उनके आरोप सही हैं और अरविंद केजरीवाल की बातें गलत हैं। ये कौन मानेगा? आप कह रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, शिवसेना के स्पोक्सपर्सन, सबने यही कहा है। भाजपा का आम आदमी पार्टी से एक बहुत कैटेगोरिकल सवाल है, can you categorically deny, and this is among the whole host of questions that Smriti Irani has posed to the AAP today, can you deny that Satyendra Jain had given 16.39 crore rupees to 4 shell companies through his family members? They are alleging that he and his wife have control over the shareholdings in these companies. They are very specific charges against him, Sanjay Singh. अगर इस एलिगेशंस में कोई सच्चाई थी तो 8 साल से ईडी क्या कर रही थी? 8 साल से 7 बार ईडी ने बुलाकर क्या क्या पूछताछ की, क्या कार्रवाई की? आपको मैं बता दूं, एक दूसरा मामला है जिसपे सीबीआई ने कार्रवाई की थी सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और इसी तरीके से सारे टीवी चैनल्स पे भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे अरे सीबीआई का छापा पड़ गया, उनको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उनके घर में सीबीआई पहुंच गई थी, उनके परिवार को अपमानित किया था। मालूम है क्या हुआ उसमें? 1 साल के बाद पहले उसमें इन लोगों ने पी दाखिल की, सीबीआई ने प्राइमरी इंक्वायरी की, और बाद में 1 साल के बाद 2018 में एफआईआर की, और 2022 के अंदर उसको 5 साल चलाने के बाद उस मामले को उसमें क्लीन चिट दे दिया, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, कह दिया कोई साक्ष्य नहीं। तो आपने बच्चों का खेल बना रखा है सीबीआई को, बच्चों का खेल बना रखा है ईडी को। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है। ये संस्थाएं किसी पे कोई कार्रवाई कर रही हैं, 5-5, 10-10 साल तक उसको सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव आएगा इसी का सहारा लेके प्रताड़ित करो और परेशान करो। आज इतनी बड़ी घटना कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही है, सरकार को उसकी चिंता नहीं है, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाता हूं, यह पहला मौका नहीं है। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था इन लोगों ने, क्या निकला? कुछ नहीं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला? कुछ नहीं। हमारे तमाम मंत्रियों पे ईडी सीबीआई के छापे हुए, 34 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में कोर्ट ने उनको बरी किया। मेरे ऊपर एक दिन में 9 एफआईआर हुई थी, यूपी में योगी जी ने किया था। और 23 एफआईआर किए, टोटल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। तो इनके पास ताकत है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं खुलेआम। ये जो बात आप लोग कह इसको रहे हैं, देखते हैं, लोग इसको समझते हैं। 400 फाइलों की जांच कराई केजरीवाल जी की, और बाद में मोदी जी ने कह दिया आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, आपको क्लीन चिट। ऐसे इसमें भी होगा, सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट मिलेगी। संजय सिंह, ये जो बात आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के खिलाफ एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए टारगेट किया जा रहा है, ये बात सारे ऑपोजिशन के लीडर्स और भी कह रहे हैं। जिन जिन के पॉलिटिशियंस आर इन द ईडी डॉग, दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग।
मैंने ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी, विल दी ऑपोजिशन यूनाइट? क्या आप जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ इसका विरोध करने में? क्योंकि आप सब अलग अलग वही बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कल तक कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के एकदम नारे लगा के बोल रहे थे कि सत्येंद्र जैन को एकदम से तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो इनका इस्तीफा मांग लो, इनको बर्खास्त कर दो, और केजरीवाल ऐसे हैं और आम आदमी पार्टी वैसी है। आज आप बताइए ना, आज वही भाषा वो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ। तो कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी, अपनी बात रखेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे खिलाफ तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, एक नहीं अनेक हजारों मामले ऐसे हुए हैं हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, निकलता कुछ नहीं। ये टैक्टिस भारतीय जनता पार्टी की धीरे धीरे फेल होती जा रही है और ये बेनकाब हो रहे हैं बार बार। आप देखिएगा हिमाचल के चुनाव में भी ये लोग हारेंगे बौखला के। ठीक है, कोई कार्रवाई करने के इनका तरीका ये होता है, कर रहे हो। कौन गलत है, कौन सही है, कौन मिसयूज कर रहा है, इसका decision, well, time will tell. Thank you very much, Sanjay Singh, for joining us and answering all of those questions. As Satyendra Jain, remember, continues to be behind bars. Is the Enforcement Directorate actually carrying out a wholehearted investigation, or is it just a mere political pawn? It's a question we'll continue to ask here on NDTV. Good night and thanks for watching.